Hello everyone. I guess we are live now. So yeah, we can start. So firstly, introduce myself. My name is Rohit Goel. I'm currently a contributor at Sosopati. So I'm today here to conduct a technical workshop, and yeah, and my the topic is the getting started with Solana 101. So let's just start. So, yeah, so let's set my screen. Share screen. My screen is visible to all of you. Yeah, it's visible. Yeah, so let's start. So, firstly, Solana presented by workshop on Solana presented by Ruth. So, so today we are discuss about the so here's the today's agenda. Firstly, why is Solana? Core concept about Solana and some programming modules. We don't go in the depth of the programming models because it's wide. We only go to some basic topics. So let's start. So firstly, this is a tweet by Jump Crypto. Tweet about the fired answer. So it's a client of Solana to increase their relativity network built by the Jump Crypto. So these are the some retweets, and we can say that retweet on these tweets. So yeah. So firstly is why Solana. Solana is a decentralized blockchain built to enable scalable, user-friendly apps for the world. This is an infrastructure to fundamental change and digital economy into user-owned and operate platform. So basically, Solana is a decentralized blockchain which used to build which used to build a user-friendly apps for the world. Like Solana is different from the other, so they basically decentralized, which don't have the central point, and it's very scalable rather than the other. Yep. So the thesis is the okay. The thesis is simple. There are 1,000 other chain. Why should you pick Solana? What does the future of the Solana look like? What are the use case of this technology? The chain use case to match your criteria for the future. So the general purpose of the blockchain, Solana main values proposition is solving the blockchain dilemma, delivering scalability, decentralization, and security without sacrificing any three mentioned features. First is user base, investment potential, and third is Web 2 to Web 3. Okay, yeah, we can go next. Yes, yeah. So next is the proof of history. So one slide is missing, guys. One second. Okay. Okay, so I guess some technical glitch on this side. So firstly, I tell what is this slide. These are the some core concept which I take today. First, the proof of history. Second is the programming models. In this, we have covered only two topics: accounts and programs, and one is the life cycle of transactions. So yeah, let's start. Yes, this slide. Why I don't know why it's not load only. Okay, so firstly is the proof of history. Proof of history basically the one of the most difficult problem is disabled system is in distributed system in a, agreement on time. What if instead of trusting the time step, you could prove the message occurred sometime before and after an event? Okay, so I'm explaining some simple word. This problem is even harder in adversarial system like a blockchain. Nodes in network can't trust an external source of time or any timestamp that appear in a message. Okay, so first point is fast.
reliable synchronization is the biggest reason Solana is able to achieve such high throughput, which such reliable synchronization guarantees Solana is able to break blocks into the smaller batches of the transaction, called it entries. Entries are streamed into validator in real time before any notion of the block consensus. Okay, so we go the next. Okay. So one is the proof stage. One of the proof of stage, another. One of the most difficult problem. Okay. So PH ensures that the timestamp in any message can be trusted. So proof of histories ensure the time between the any message is trusted. Okay. So another is proof of history is not a consensus mechanism, but it is used to improve the performance of Solana proof of stake consensus. Okay, so POH solve this by creating a way that all participants can agree in what order things have happened, but cannot calculate it in advance. Okay, so this is an example tower BFT. So tower BFT, we can say that the Byzantine fault tolerance. So what is this BFT? BFT is the ability of a distributed computer network to function as desired and correctly reach a sufficient consensus despite malicious component of the system or failing or propagating incorrect information to other peers. Basically, it's a mechanism to detect or correctly reach the failure system. Like हमें पता चलना चाहिए कि failure system कौन सा है basically. तो ये है टावर BFT जिसपे सोलाना इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है. So it's called it a practical Byzantine fault tolerance. So it's called it a PBFT, one of the most popular model that achieves this by establishing a leader node that purposes transaction and backup nodes that vote to approve or reject the transaction. मतलब nodes के हिसाब से voting होती है. तो if vote get high, then approve the transaction. If that rejected, then reject the transaction. इसमें जो मॉडल है वो ओनली वर्क इन ए क्लासिकल फॉर्म विद स्मॉल कंसेंसस ग्रुप साइजेस ड्यू टू गिवर सम अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन देम. मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन ना आए, इसलिए ये क्लासिकल फॉर्म में वर्क करता है जिसमें हम छोटे छोटे साइजेस छोटे छोटे बैचेस यूज करते हैं बेसिकली. सो वी कैन डू द नेक्स्ट. ओके, सो अनदर इज द टर्बाइन. Okay, so what is turbine? One of the challenges to high performance blockchain is how the network propagate large amount of data to a large number of peers. So basically, turbine is the basically a leader process of the transaction in which we have a large number of the data. So it's processed on a high performance blockchain. मतलब हमारे performance compromise नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम टर्बाइन को यूज करते हैं बेसिकली ऑन द लार्ज नंबर ऑफ द डेटा व्हेन वी हैव large number of peers. So yeah. Okay, so I will show you the source of this. I will yes, and post in the comment section also to help you guys more about the turbine. So yeah. Okay, so okay. ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ एज मतलब लाइक आज का अपन एग्जांपल लेते हैं जिससे आज है 27 सितंबर वेडनेसडे. सो अगर आज का हमें वैलिडेट करना है 2014 का, तो हमें उसके लिए बहुत नंबर ऑफ द डेटा चाहिए. उसके लिए हमें पहले एक लीडर असाइन करना पड़ेगा जो हमारे अलग अलग वैलिडेटर्स बनाएगा स्मॉल स्मॉल नंबर के. मतलब से वी हैव द डेटा ऑफ समथिंग अराउंड 10 मिलियन, तो हमें उसके स्मॉल बैचेस बनाने पड़ेंगे 1 मिलियन के 10 बैचेस बेसिकली. उसके ऊपर फिर वो हमारे वैलिडेटर बनाने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर वो आसानी से काम करेंगे. जैसे या दिस इज द एग्जांपल, लाइक यू कैन easily share that this is the leader and this is the validator 1 and this is the validator 2. So validator 1 can communicate validator 2 and validator 2 can communicate validator 1, and a leader can communicate both the validators. So yeah, this is the okay. So second topic is the Gulf Stream. Gulf Stream is Solana. So yeah, so Gulf Stream basically is the memo pool. Memo pool is used to store the transaction currently being broadcasted over the network. मतलब जो हमारे करंट ट्रांजेक्शन मतलब जो करंट ट्रांजेक्शन सोलाना पे चल रहे होंगे उनको वो एक जगह स्टोर कर लेता है
जो जिससे हम अगर नया मतलब जैसे ब्लॉकचेन का नया ब्लॉक बनेगा तो उसमें वो प्रीवियसली चले चले जाएंगे। सो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, लाइक दिस। ठीक है। सो अभी इसने अपने देखोगे दैट लेट्स से टुक एट इथेरियम्स। तो ये जैसे मान लो कि दिस इज द करंट ट्रांजेक्शन वी हैव, लाइक जुलाई 17, बिटवीन जुलाई 17 एंड जुलाई 31, we have transaction around 350K. So these are the current transaction are stored in another block of the blockchain, and these are the remaining transaction are running simultaneously. Okay. So these are some topic about the Gulf Stream. And okay. So our solution is to this problem on the Solana network is to push transaction coaching, कैचिंग एंड फॉरवर्डिंग टू द एज ऑफ द नेटवर्क। मतलब हमें जो करंट ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन वैल्यू की वैल्यू हाई है, हमें उसके एंड तक पहुंचाना है नेटवर्क के। अगर एक बार ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड हो गया टू एनी वैलिडेटर, वैलिडेटर फॉरवर्ड्स टू अपकमिंग लीडर। मतलब जैसे कि वैलिडेटर वन के पास जो ट्रांजेक्शन था उसने वैलिडेटर टू को भेज दिया, तो वैलिडेटर टू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो लीडर को उसको भेजे। ठीक है। ओके। दिस अलाउ मतलब इससे वैलिडेटर को क्या मतलब होगा, इससे होगा कि वैलिडेटर वन को फिर नया टाइम मिल जाएगा कि वो दूसरे ट्रांजेक्शन को ले सके। मतलब एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन अहेड ऑफ टाइम, रिड्यूस कंफर्मेशन टाइम्स विद स्विच लीडर फास्टर, reduce the memory pressure on a validator from unconfirmed transaction pool. Okay, so another is the C level, Solana parallel smart contract runtime. C level is the Solana's parallel smart contracts. In this, the transition that only reads certain states can be executed in parallel as well. This is a high level description of how it is work. Sort million of pending transaction, शेड्यूल ऑल द नॉन ओवरलैपिंग ट्रांजिशन पैरेलल। मतलब जैसे हमारे जैसे साइमल्टेनियसली हम मतलब एक साथ मान लो कि सोलाना पे बहुत सारे यूजर आ गए, तो अब कभी बार तो होता है वेब टू सिस्टम तो क्रैश कर जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि ये इस पैरेलल चलाएगा। मतलब जैसे 20 ट्रांजेक्शन जो होंगे जो एक टाइम पर आएंगे उनको एक पैरेलल चलेंगे, एंड जो उसके नेक्स्ट टाइम पे आएंगे जितने ट्रांजेक्शन वो एक साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो एक सी लेवल लाइक काइंड ऑफ एक सी बन जाएगा, इसमें सारे ट्रांजेक्शन पैरेलली चल रहे होंगे एंड कुछ भी क्रैश नहीं होगा। हाँ, दिस इज द नॉन ओवरलैपिंग। मतलब जैसे किसी की ट्रांजेक्शन आईडी सेम नहीं हो रही, मतलब एक यूजर ने अगर एक बार ट्रांजेक्शन कर रहा है साइमल्टेनियसली दूसरी बार ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे नहीं करना चाहिए। मतलब नॉन ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शंस पे यही काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। So there are five programming models: accounts, program, transaction, instruction, and RPC. Today we are discuss more about accounts, program, and little bit about transactions. Yeah. Okay, so accounts. So okay, draw parallel with accounts and database table. मतलब in this we are using MySQL. This is the day. So let's see the example. In this we okay, student key is the value database, and okay, so in this student key is the value database. Student key is the value database, and the Solana is a huge key value database. Each Solana node stores this key value database in memory. In Solana nomenclature, sorry. In Solana nomenclature, the key is called address and the value is called the account. Each address point stores to account where the data is stored. मतलब कि ये जो एक है इनको nodes कहा जाएगा, and sorry total को nodes कहा जाएगा. Each is called it the address points of the day of the account. Okay, so these are the some like we can say that the smart contract form जिस पे हम मतलब SQL से इंटीग्रेट करके और अपने वॉलेट को इंटीग्रेट करके हम एक पब्लिक की बना सकते हैं टू आइडेंटिफाई एन अकाउंट। मतलब जैसे अकाउंट में रो है या टेबल है या फाइल सिस्टम है, तो हम इस कोड की मदद से मैं आपको शेयर कर दूंगा, इशू नहीं है इसमें तो। ओके, सो आई गेस व्हाट वाज दैट, आई गेस अनदर ग्लिच इज दैट। ओके, सो अकाउंट्स है। ओके, सो इसके बारे में एक लाइन मैं बता दूं, आई थिंक ये पीपीटी सही से नहीं हो पा रही है। ओके, नो इशू। अकाउंट्स आर द स्टोर्ड डेटाबेस ऑफ द एसक्यूएल फाइल्स। ठीक है। ओके, account store database to hold native SQL tokens. Yeah, this is a short line of the accounts.
ओके, ईच अकाउंट हैज यूनिक एड्रेस, मतलब हर अकाउंट का एक यूनिक एड्रेस होगा जो 256 बिट नंबर का होगा। मतलब जैसे आप अपने फैंटम में जाके अगर सोलाना वॉलेट बनाओगे तो वो आपको एक वॉलेट एड्रेस देगा, वो हर यूजर का अलग होता है। एंड या प्लीज डोंट शेयर इट। एड्रेस कुड बी पीडीए, मतलब एड्रेस एक पीडीए के फॉर्म में होता है स्टोर। अकाउंट डेटा स्टोर इज पेड विद रेंट। इनएक्टिव एसक्यूएल टोकन्स, मतलब जिस अकाउंट की जो डेटा है वो एक रेंट के थ्रू पे की जाती है, which are the inactive SQL tokens. Anyone can read or credit SQL token to any और, मतलब जैसे अगर मतलब मान लो कि एक पब्लिक की होती है जिसकी वजह से कोई भी आपका क्रेडिट चेक कर सकता, मतलब ओनली चेक द अमाउंट यू हैव इन द अकाउंट। ओनली अकाउंट एनर कैन डेबिट द एसक्यूएल, मतलब आप सिर्फ निकाल सकते हो, देख कोई भी सकता है। मतलब जैसे मैंने मान लो आपको अपना वॉलेट टोकन दे दिया, तो आप डाल सकते हो मेरे वॉलेट में, कोई इशू नहीं है, बट हाँ निकाल सिर्फ नहीं सकता हूँ, लाइक नॉर्मल बैंक अकाउंट। ओके, सो दिस इज द पीडीए स्ट्रक्चर। प्रोग्राम एड्रेस ट्रांजेक्शन, पहले एक टोटल नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क ट्रांजेक्शन जाएगा वैलिडेटर के पास, वैलिडेटर चेक करेगा प्रोग्राम काउंटर, फिर इट चेक विद द ओनर, मतलब विद चेक विद द पासवर्ड, मतलब जो मैं पासवर्ड डालूंगा बेसिकली, अगर वो करेक्ट होता है तो वह वापस प्रोग्राम काउंटर के पास आएगा। एंड वैलिडेटर रिस्पॉन्स देगा, फिर वैलिडेटर रिस्पॉन्स देगा ट्रांजेक्शन को, एंड हमारे ट्रांजेक्शन हमारी यूआई यानी डीएप डिस्प्ले हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज अबाउट दिस। या सो मतलब अपन एक आधे पोर्शन की बात करते हैं, वैलिडेटर प्रोग्राम। ओके, सो ओके, program on Solana are stateless. They don't hold state. State is stored in account. So when a program wants to save anything, it's load the account and updates the data. For a program to load an account, in our example, the counter state account, it's need the address. मतलब काउंटर स्टेट को हमारा एड्रेस चाहिए ही चाहिए होगा, बेसिकली हमारा वॉलेट एड्रेस है। मतलब लाइक मतलब ये जैसे एक एड्रेस की शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने कहीं सेव कर दी, जैसे CDTX9RX जो भी है, सो दैट थिंग्स। सो ये एड्रेस को चाहिए ही होगा। सो सो दिस इज द पीडीए फॉर ए नॉन ट्रिवल प्रोग्राम। दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो इसमें आप देखोगे तो जैसे S1 है उसका वॉलेट एड्रेस ये है, S2 ये है, S3 का ये है, दिस। सो इसको हमने एक जगह सेव कर लिया स्टूडेंट आईडी के नाम से, मतलब जैसे स्टूडेंट 1 है उसका वॉलेट एड्रेस ये है, स्टूडेंट 2 है, दिस इस दिस भी प्रॉब्लम बिकॉज ये हमने एसक्यूएल टोकन में कहीं सेव नहीं करा, मतलब आप इसमें देखोगे तो हमने कहीं भी वॉलेट एड्रेस नहीं डाला। बट ईच अकाउंट इज रेफर बाय स्टूडेंट आईडी, मतलब हमने इसके एसक्यूएल टोकन की मतलब स्टूडेंट आईडी, जैसे आपने देखा स्टूडेंट 1 की स्टूडेंट आईडी है ST348245, तो इसके पीछे हमने इसका अकाउंट एड्रेस डाल दिया, तो अगर कोई आईडी भी डालता है तो उसको वो अकाउंट शो हो जाता है। बट हाँ, दिस इज द वेरी हेक्टिक जॉब जब आपके पास अगर 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, वी कैन से दैट आपके पास उससे भी ज्यादा का डेटा है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज इसमें आपको सारी एंट्रीज मैन्युअली करनी पड़ेगी बेसिकली। से देख जैसे लाइक मैंने और एंट्रीज ऐड कर दी, बट आई डोंट हैव दैट, मतलब लाइक मेरे को मैन्युअली ऐड करने में बहुत जो रहेगा। सो ये, so this is the public key where the student data is saved. Final find program address. This is the student key, and this is the program ID. Find program address like which. This is your find program ID, find program address, and this is the student ID, and this is the program ID which we have unique data. Okay. So इसमें है जो service to, मतलब basically this is the general form where we put the wallet address, student ID, and program ID. Okay. So what is the rent? Rent storing data is not free. Validator must have to keep a record of account state. When you create an account, has it has to be a rent extent. You need to know upfront how much space to allocate to an account. If the account does not have enough to pay rent, the account will be delocated and the rent removed. So there's a fact about the 2 years. This is drawn from the fact hardware costs drop by 50% in price every 2 years. मतलब we can consider the live example, मतलब जैसे आपने घर का रेंट पे नहीं करा तो आपको जाना पड़ेगा। So this is the basic example, अगर आपने 2 साल तक घर का रेंट पे नहीं करा basically. So this is the code for the rent you can make in the smart contract form. So we have the 1500 rent, and the connection establishment within the data length and the rent exception.
So yeah. So another is the, let's start with the program. Program are a special kind of account whose data is CBF bytecode. मतलब programs का जो data है वो bytecode language में होता है basically. You can write program in Rust, C, C++, Python is already. If you are मतलब वैसे आप किसी में भी लिख सकते हो, पर Solana mostly Rust को and Solidity को support करता है. So yeah, मतलब Python में भी लिख सकते हो, issue नहीं है. But I'm not go there. Okay. So another is program are the stateless. They can read and write on other accounts. प्रोग्राम मस्ट बी ओनर ऑफ अकाउंट टू परफॉर्म डेबिट और राइट्स. मतलब प्रोग्राम का कोई ओनर होना चाहिए, मतलब मेरे अकाउंट का कोई ओनर एग्जिस्ट करना, मतलब बेसिकली मतलब मैं ही ओनर हूँ उसका. तो लेकिन लाइक सीन इज की मतलब अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो आई कैन डेबिट और राइट इन माय प्रोग्राम प्रोसेस इंस्ट्रक्शन. मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही प्रोसेस होते हैं. प्रोग्राम कैन सेंड इंस्ट्रक्शन टू अदर प्रोग्राम, मतलब सीपीआई. मतलब तो जैसे एक प्रोग्राम है मतलब लाइक माय वॉलेट एंड आई सेंड टू ट्रांजेक्शन टू अनदर वॉलेट, तो आई मस्ट हैव द इंस्ट्रक्शन. ओके, तो लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन. ओके, ट्रांजेक्शन आ रहा है इनिशिएट बाय करंट लीडर. सो बेसिकली इज द basically leader filter validate transactions. So another topic is leader filters validate transaction. Leader executes valid transaction, uploading, updating in state. Leader package transaction into entries. Leader transmit the entries to validator nodes. मतलब like एक align mode में already चलता है वो. So basically हाँ, validator retransmit entries to peers in their set and to further downstream nodes. Validator validate the transaction and execute them on their state. At a specific time, validator transmit votes to the leader. Validator observe their votes and all the votes from the cluster. So इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं बिकॉज द ट्रांजेक्शन की एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है. मतलब एक आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है यूएसडीसी से या फिर सोल कॉइन से, उसका एक है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांजेक्शन आर ingested by current leader. सो ट्रांजेक्शन मतलब जो मान लो जैसे मैं करंट लीडर हूँ और मेरे 10 वैलिडेटर है, तो लीडर ही ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकता है. मतलब लीडर ही ट्रांजेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है. ओके, फिर आएगा अनदर. फिर सेकंड पॉइंट क्या, लीडर फिल्टर द वैलिड ट्रांजेक्शन. मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास 10 ट्रांजेक्शन एट ए टाइम आ गए एंड उसमें से दो ऐसे हैं कि मतलब जो जस्ट मतलब 0.5 सोल, मतलब उनका अमाउंट बहुत कम है. सो आई विल प्रायोरिटाइज द ट्रांजेक्शन. मतलब बेसिकली मैं ट्रांजेक्शन को प्रायोरिटाइज करूंगा. जैसे मान लो जिसका अमाउंट ज्यादा है तो पहले वो चेक करूंगा कि वो सही वॉलेट से आ भी रहा है या नहीं आ रहा. बेसिकली नॉट ए स्पैम, नॉट ए स्कैम काइंड ऑफ थिंग. सो लीडर फिल्टर द वैलिड ट्रांजेक्शन. Okay, so थर्ड पॉइंट इज लीडर एग्जीक्यूट द वैलिड ट्रांजेक्शन एंड अपडेटिंग स्टेट. मान लो जैसे मुझे कोई वैलिड ट्रांजेक्शन मिल गया तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूंगा एंड मेरी स्टेट को अपडेट करूंगा कि या आई हैव फॉरवर्डेड दिस ट्रांजेक्शन टू अनदर स्टेट. लीडर पैकेजेस ट्रांजेक्शन इनटू एंट्रीज. मतलब मैंने कोई फॉरवर्ड किया एंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो उस ट्रांजेक्शन का जो नोट है वो एंट्री में नोट डाउन हो जाएगा basically. Okay, so fifth is leader transfer the entities to validator node in signed threads. मतलब जो वैलिडेटर मतलब अगर ट्रांसमिट हो गई एंट्री, फिर वो वैलिडेटर के पास जाएगी एंड उस वैलिडेटर उसको एक सिंगल शीट में लिख लेगा. ओके, सो वैलिडेटर. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिडेटर रीट्रांसमिट एंट्रीज टू peers in their set and to further downstream nodes. मतलब वैलिडेटर फिर उसको आगे अपने सेकंड वैलिडेटर को भेजेगा एंड फिर आगे आगे जाता जाएगा अपने peers के पास इन द डाउनस्ट्रीम फॉर्म. बेसिकली वो अपने स्टोरेज में जा रही है. ओके, वैलिडेटर वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड एग्जीक्यूट देम ऑन देयर स्टेट. मतलब वैलिडेटर भी फिर चेक करेगा उस ट्रांजेक्शन को कि वो सही है या नहीं एंड या तो उसको अपने फिर स्टेट में वो डालेगा. एट स्पेसिफिक टाइम वैलिडेटर ट्रांसमिट वोट्स टू लीडर. मतलब जैसे 10 वैलिडेटर है, उन 10 में से 5 ने चेक किया कि वो सही है तो वो लीडर के पास जाएंगे. सॉरी, 6 ने चेक किया तो वो लीडर के अपने उसके वोट जाएंगे. लीडर ऑब्जर्व देयर वोट एंड फॉर्म ए क्लस्टर. मतलब लाइक ए क्लस्टर फॉर्म करेंगे इसमें काइंड ऑफ द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. सो या दे विल मूव फॉरवर्ड देन. सो या this is about the life cycle of the transaction. Okay, okay, so I think I have to repeat
Okay. So, so now I give you the overview of the what I have taught today. So, firstly, we learn about why Solana. What is the mission of the Solana? So, Solana is a basically decentralized blockchain built to enable scalable, user-friendly apps for the world. This is the infrastructure to fundamentally change the digital economy into a user-owned or operated platform. So basically Solana काम क्या करता है? वो यूजर फ्रेंडली एप्स बनाता है जिनकी स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है, जो यूजर को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसमें आप खुद ओन करो और खुद ये प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर सको. ओके. सो सो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द फ्यूचर ऑफ द ब्लॉकचेन लुक लाइक, मतलब ब्लॉकचेन का फ्यूचर कैसा हो सकता है. सो बेसिकली ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है. सो या व्हाट आर द यूज केस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. यूज केस आर लाइक द use case are like the like user owned and operated platform. Okay. So why should I pick the Solana? It match the future I have in mind. मतलब मैंने Solana क्यों पिक किया, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर, जो मेरे माइंड में मेरा फ्यूचर है उससे मैच कर रहा था. So, so एक जनरल पर्पस क्या हुआ है ब्लॉकचेन का. सोलाना मेन वैल्यू प्रपोजिशन टू सॉल्विंग द ब्लॉकचेन ट्रायलेमा. सो मतलब बेसिकली व्हाट इज द ट्रायलेमा? Delivering scalability, decentralization, security without sacrificing any of the three mentioned features. So first is user base, investment potential, web 2. ठीक है. Okay, so second we have discussed about the core concept. So proof of history, tower BFT, turbine, Gulf Stream, and sea level. Okay, what is the proof of history? Proof of history, one of the most difficult problem in distributed system इन एग्रीमेंट ऑफ टाइम. मतलब प्रूफ ऑफ हिस्ट्री बेसिकली हुआ कि सोलाना की प्रीवियस हिस्ट्री. सो किसी को अपनी वर्थ या फिर किसी को चीज प्रूफ करने के लिए उसको हिस्ट्री बतानी पड़ती है. सो दिस इज द वेरी डिफिकल्ट. मतलब जैसे को आपको कोई ब्लॉकचेन में है तो नोट्स मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उससे जो टाइम स्टैम्प है वो बढ़ जाता है. सो बेसिकली प्रूफ ऑफ हिस्ट्री इसलिए बनाई गई थी. Okay. POH ensures that the timestamp in any message can be trusted. मतलब जो external source से आ रहा है blockchain या node पे trust करेगी तो उससे timestamp बढ़ेगा, पर एटलीस्ट अगर ट्रस्ट हुआ तो POH उसको हेल्प करती है उस चीज में. Second point, POH is not a consensus mechanism, but it is used to improve the performance of Solana proof of stake consensus. POH कोई कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम नहीं करता, बट हाँ ये सोलाना की प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब बेसिकली सोलाना के एक्सटर्नल सोर्स या फिर इंटरनल नोड्स को सही करने मतलब सही सही प्रूफ करने में काम में आता है. Tower BFT. So what is the full form BFT? BFT is the Byzantine fault tolerance. What is this? It is the ability of a distributed computer network to function as desired and correctly reaches sufficient consensus despite malicious component of the system failing or propagating incorrect information to other peers. Basically BFT क्या करता है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं हम. BFT क्या करता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो करेक्टली रीच करता है अपने मतलब सही जगह पर पहुंचने के लिए, rather than द इसके जो खराब कंपोनेंट है फेलिंग और प्रोपेगेट इनकरेक्ट. मतलब BFT इंश्योर करता है कि पीयर्स तक या फिर नोड तक कोई भी मैलिशियस कंपोनेंट ना पहुंचे या सिस्टम फेलिंग ना हो या प्रोपेगेटिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. इसलिए ये तीन चीजें ये सही करता मतलब देखता है. ये ऐसा नेटवर्क है जो इंश्योर करता है ये चीज तीन तीन चीजें कंप्यूटर से सिस्टम में ना हो बेसिकली. Okay, so second is a turbine. Turbine is the high performance blockchain. It's how the network propagate large amount of data to a large number of peers. So basically, turbine क्या करता है, large number वो अपने पास जैसे large number of data है तो उसको सही करता है कि अब वो एक सही से वैलिडेटेड हो. उसके लिए ये टर्बाइन दो चीजें परफॉर्म करता है, वैलिडेटर और लीडर. So validator should be small batches of the data and leader which ensures the all the validator. So that like this. Uh, like this. This is the leader, this is the validator one, and this is the validator two. This is the validator one, and this is the validator two. Validator one and validator two are the neighborhood and leader, which ensures the both the validator. Okay, so थोड़ा सा इसके बारे में और मैं बता देता हूँ. Solana cluster is uses a multi-layer block
propagation mechanism called a turbine to broadcast transition threads to all the network. मतलब सोलाना का क्लस्टर एक टर्बाइन मैकेनिज्म यूज करता है जो अपने पास सारी जितने ट्रांजेक्शन है उनको एक साथ ब्रॉडकास्ट करने में दिस स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल for broadcasting entries generated by POS service or the proof of history service to the rest of the network. These entries are converted into shreds, which represent the smallest unit of a block and then sent to the rest of the network using a block propagation technique called a turbine. The leader breaks blocks into packets of 64 KB in size. This is called it a shred. मतलब एक shred क्या हुआ किसी वैलिडेटर मतलब किसी एक पैकेट का साइज जिसका 64 मतलब जैसे एक वैलिडेटर के अंदर आप अपने पास 10 मिलियन पैकेजेस है उस एक पैकेज का साइज होगा 64 केबी उसको इस एक पैकेज को अपन कहेंगे shred. The cluster divide itself into small collection of nodes called it neighborhood. मतलब ये जो बेसिकली जो neighborhood अपन ने लिखा है तो validator 1 एक behave like a node and validator 2 is behave like a second node. Each node is responsible for sharing any data received with the other node. मतलब जैसे मान लो validator 1 के पास कोई डेटा आता है तो उसको validator 2 को शेयर करना पड़ेगा. validator 2 के पास ऐसा डेटा आता है जो validator 1 के पास नहीं है तो वो उसको validator 1 को शेयर करना पड़ेगा. As well as propagating the data into small sets of node into other. This is the way each node only gets communicate. मतलब यही एक तरीका है जिससे दोनों नोड आपस में कम्युनिकेट करती है. Each neighborhood responsible for transmitting a portion of its data. Okay, so next slide. Okay, so another topic we have discussed today is the Gulf Stream. Gulf Stream is a memo pool solution for forwarding and storing transaction before processing that. मतलब गल्फ स्ट्रीम एक बेसिकली ऐसा तरीका है कि हमारे जो करंट ट्रांजेक्शन हमने चल रहे हैं जो हमारे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं नेटवर्क पे बट वो प्रोसेस नहीं हुए मतलब जैसे मान लो ऐसे ये एग्जांपल मैंने दिया था दिस दिस इज द ट्रांजेक्शन इट्स प्रोसेस मतलब जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है बट दीज आर नॉट इन प्रोसेस मतलब ये रिक्वेस्ट गई हुई है बट नॉट इन द प्रोसेस. सो ये सारे करंट ट्रांजेक्शन है जिनको गल्फ मतलब जो एक जगह स्टोर हो जाएंगे उस स्टोरेज ऑफ द स्टोरेज को अपन कहेंगे गल्फ स्ट्रीम. सो दिस अलाउ वैलिडेटर मतलब ये वैलिडेटर्स को क्या क्या चीजें करने से अलाउ करती है. एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन अहेड ऑफ टाइम, reduce confirmation time, switch later faster, reduce memory pressure on validator from the unconfirmed transaction pool. सो बेसिकली मान लो कि अगर अपन इनको कहीं दूसरे ब्लॉक में ब्लॉकचेन के दूसरे ब्लॉक में स्टोर कर दिया तो एक तो वैलिडेटर को थोड़ा कम टाइम लगेगा मतलब ट्रांजेक्शन मतलब बाकी की जो प्रोसेस ट्रांजेक्शन है उनको प्रोसेस करने में मेमोरी कम यूज होगी. सो या अनदर इज द सी लेवल. सी लेवल बेसिकली इज द सॉर्ट ऑफ मिलियन पेंडिंग ट्रांजेक्शन. मतलब सी लेवल में क्या होता है कि जो भी हमारे पेंडिंग ट्रांजिशन है वो एक साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. शेड्यूल ऑल नॉन ओवरलैप ट्रांजिशन पैरेलल मतलब जो ट्रांजिशन चल रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग ट्रांजिशन आर द ट्रांजिशन व्हिच हैव द सेम टाइम एंड द सेम मतलब जैसे एक ही यूजर ने 2 बार रिक्वेस्ट डाल दी तो उसकी एक ही रिक्वेस्ट मतलब वो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होगा. अगर किसी यूजर ने एक बार में एक ही रिक्वेस्ट डाली तो दिस तो वो ट्रांजिशन सी लेवल के थ्रू पैरेलली चल रहा होगा किसी रन टाइम में किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. Okay, so another is a programming model. So in Solana we have 5 programming model. First is accounts, second is program, third is transaction, fourth is instruction, and fifth is RPC. Today we are discuss only account, program, and little bit about transactions. So first is account. So accounts are stored in MySQL. Student, so this is the example of the 12th student account. We can say that I have picked the only screenshot of 12th student. So yeah, तो इसमें जो स्टूडेंट आईडी है दिस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब स्टूडेंट आईडी है किसी स्टूडेंट का बेसिकली वो हुआ यूनिक आइडेंटिफिकेशन. सोलाना इज अ की, दिस इज अ वैल्यू डेटाबेस. सोलाना इज अ ह्यूज की वैल्यू डेटाबेस. ई सोलाना नोड स्टोर दिस की वैल्यू डेटाबेस इन मेमोरी. मतलब ये जो एक की हुई ST वाइट ये वन स्टूडेंट वन की वाइट आर H21 ड्राफ्टिंग. सो दिस इज द होल इज सोलाना की मतलब ये पूरा एक स्टूडेंट या एक यूजर का सोलाना की हुआ. सो दिस इज स्टोर इन द वैल्यू डेटाबेस मतलब ये पूरे स्टूडेंट का एक साथ स्टोर होगा बट एक्सेस सिर्फ स्टूडेंट आईडी की मदद से हो. सो दिस इज द
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल वी कैन राइट द डेटा यूनिट एरे, मतलब 8 एरे की बननी चाहिए। नंबर मतलब दिस आर द code I can share you accounts. So some are the points about the accounts. Account store data and hold native SQL tokens. Each account have unique address, 256-bit number. Address could be PDA. Address data store is paid with rent in native SQL tokens. As anyone can read from or credit native SQL token to any accounts. Only account owner can debit SQL token from an account. Okay, so PDA is the transaction validator, program counter, and state owner. So now we have discussed about only the network system. We have validator. Um, yeah, this is the valid IP address. Yes, so we have to focus there. Yeah. Okay. Yeah. So this is the program counter. Program counter only works on where we have to save the address. Like this is the CDTR on RXS. So this already I discussed those things. Yeah. Okay. So what is the rent? In rent, storing data is not free. So I think I have discussed this. This is about the rent program or the special kind of account which use data in bytecode. You can write program in Rust in all these languages. Programs are stateless. They program must be the owner of an account to perform debits or write program process instruction. Yeah, this the life cycle I have only in detailed form. So yeah, thank you guys for the audience. If you guys have any question, write down in the comments section. I will I will answer this. So what's next? So these are the some important links. I will drop down into the comment section. So yeah, thank you guys. Bye.